ओके हम लोग यहाँ पे करेंगे अपॉर्शनमेंट, ठीक है। नाउ सम ऑफ द कॉस्ट आर डायरेक्टली एलोकेटेड, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल है। आप ऑब्जर्व करें, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल भी दिया हुआ और एलोकेशन ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली नोन एज एलोकेशन, सही है। एलोकेशन डायरेक्टली डिपार्टमेंट को जो कॉस्ट चली जाती है, दैट्स व्हाट एलोकेशन मीन्स। अपॉर्शनमेंट एक अलग चीज है। अपॉर्शनमेंट मीन्स assigning cost to different departments according to a suitable base, ठीक है। इसको अपॉर्शनमेंट कहते हैं। अब जरा देखते हैं, हमारे पास पहला ओवरहेड कौन सा है? इनडायरेक्ट लेबर, दैट इज 51,600। इनडायरेक्ट लेबर किसको फैसिलिटेट कर रहा होगा? जो भी हमारी लेबर काम कर रही होगी, दैट इज डायरेक्ट लेबर। ओके, सो द ओवरहेड वैल्यू गिवन इज 51,600। I'll do the math over here. अगर मुझे कटिंग डिपार्टमेंट का निकालना है, मैं क्या करूंगा? कटिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर दैट इज 497,000 डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है? 933,000। बताएंगे मुझे क्या आ रहा है वैल्यू, प्लीज? कैन यू टेल मी द वैल्यू? द शेयर ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट, द बर्डन ऑफ ओवरहेड्स shared of indirect labor by cutting department, बता दें प्लीज। हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? सॉरी Hassan, can you say it again? I'm repeating this again. मेरे टीचिंग आवर्स तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हो गए, ठीक है। अब मेरा असिस्टेंट जो कि इनडायरेक्ट लेबर होगा, वो पेपर्स भी चेक कर रहा है, वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट कर रहा है, वो आपकी करेक्शंस भी करके आपको समझा रहा है कि जी ये एरर्स किए हैं आपने। कहने से उसके लेबर आवर्स अलग होंगे। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो दिस इनडायरेक्ट लेबर इज नॉट ओनली फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट लेबर, बट इसका अपना काम भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो इनडायरेक्ट लेबर की जो अराइज हो रही है, वो आई किसकी वजह से रही है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द लेबर आवर्स। लेबर की कॉस्ट की वजह से वो अराइज हो रही है। लेबर की कॉस्ट बर्डन उठाएगी इसका। टीचर्स होंगे तो असिस्टेंट्स हायर होंगे ना। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कारपेंटर्स होंगे तो उसके जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए लेबर होती है वो हायर होगी ना। यू फॉलो माई पॉइंट? हेलो, डिड यू गेट दिस? कैन यू टेल मी द वैल्यू प्लीज? 51,600 और कटिंग का डायरेक्ट लेबर कितना है? 497,000 डिवाइड बाय 933,000। और डायरेक्ट लेबर एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपको देनी ही देनी है। इट्स अ कंपल्सरी कॉस्ट, ठीक है। 27487 कर देता है, ठीक है। ठीक है, अब हमने एक की अपवर्ड राउंडिंग ऑफ कर दी है, बाकी मोल्डिंग निकाल लेते हैं। मोल्डिंग का भी यही होगा। हमारी इनडायरेक्ट लेबर कितनी है? 51,600। मोल्डिंग की हमारे पास डायरेक्ट लेबर है 269,000 डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर इज 933,000। बताएं ज़रा क्या आ रहा है शेयर? ओके, सो 14,877 इज फॉर मोल्डिंग, ठीक है। अब आई कैन क्लियरली सी के डायरेक्ट लेबर इज नॉट वर्किंग फॉर कैंटीन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो आई पुट अ डैश ओवर हियर टू फॉर कैंटीन एंड मेंटेनेंस। हाउएवर, what I did was there were running decimals coming for indirect labor जो मैंने apportionment की थी,
ठीक है इन दोनों के लिए. So what I'll do is, जो मैंने राउंड ऑफ किया था ना, जो मैंने राउंडिंग ऑफ की थी इन दोनों के लिए, what I'll do is I'll subtract them from the total. यानी कि total minus these two figure, you'll get the share of painting. You can directly calculate that as well, but again you'll get a decimal figure, and to mitigate that decimal की rounding off को, तो what I'm doing is I'm just subtracting total में से ये दोनों values, तो I'll get the third value, balancing figure जिसको हम कहते हैं. You get my point? मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, बट अगेन यूल गेट अ वेरी, उसमें $2-3 का $10 का डिफरेंस आएगा. जस्ट टू अवॉइड दैट, व्हाट आई एम डूइंग इज टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें, यूल गेट पेंडिंग, विच इज क्या आ रहा था अफनान, कैन यू रिपीट इट अगेन? 13636. That's correct, guys. 9236 आ रहा है, आई थिंक. See, prime example that calculation can become a pain in this topic. So be very, very vigilant and very careful how to go about things. All right. Let's do it for administration. Did you copy down this working below? Uh, leave some space. यहाँ पे भी अभी further काम होगा. Just copy this down. Copy these workings down on the next page maybe. All right. Next is administration. Administration किसके लिए होती है? I told you before. किसके लिए hire होती है? We're not going to look at the table again and again. Number of employees. Okay. Now the overhead given over here for administration is 13,300, and we're gonna check out the number of employees data over here. 120, 90, 150, 15 and 25, total is 400. So 13,300, मैं cutting का निकाल लूँ, the rest you're gonna do it by yourself. Number of employees कितने हैं? 120 divided by 400. तो हमारे पास पता चल जाएगा कि apportionment cutting का burden कितना शेयर कर रहा है. ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो टास्क है, कटिंग कितना उसका बर्डन शेयर कर सकता है इस ओवरहेड का. दैट इज हाउ मच? कैन यू प्लीज टेल? 13,300. या, कैन यू प्लीज टेल? आई डोंट नो. 3990. Fareed, are you there? I want molding. Molding is 2993, and painting is 4988. Okay. 499. अच्छा, अगर राउंड ऑफ किया है तो what you'll do is 13,300 minus all these four figures, you'll get maintenance 831. Okay, 831 ना. Now rent and rates will be according to what, किसके लिए rent pay कर रहे हैं हम लोग? For the floor area. Okay, what I'm gonna look for is the floor area figures. Square meters में 4,500, 2,000, 3,000, 200, 300 and 10,000. Let's solve this. I'll just erase. तो रेंट एंड रेट्स कर लेते हैं हम लोग. कितना है? 113,500. तो मैं कटिंग का निकाल लेता हूँ. फ्लोर एरिया कितना दिया हुआ है कटिंग का? 4,500.
divide by 10,000. That gives you how much? कटिंग का शेयर कितना आ रहा है? ओके, इसी तरह हम लोग मोल्डिंग का निकाल लेते हैं. 113,500, 22,700. Then canteen is same. How is that possible? No, canteen is 34,270. 2270. Okay. 3405. Can you sum them up and just check the total is reconciling? Okay, this minus all these four figures should lead to this. Okay. So yeah. So next is welfare. Welfare is for what? किसके लिए? Employees. Very good. So employees का हम देख लेते हैं. Data ये रहा सारा. I'll just enlarge this and you guys can just solve this. Okay. Let's do insurance. Insurance is done according to the floor area. So कितनी है वैल्यू इंश्योरेंस की हमारे पास? 94,500. फ्लोर एरिया कटिंग का कितना है? 4,500 डिवाइड बाय 10,000. How much are you getting for each? So 94,500 is the value of insurance. Total value. Cutting department कितना उसका burden share करेगा? According to the floor area. 4,500 divided by total floor area is 10,000. ठीक है? 42525. Zoeb, are you getting this? Then similarly for molding you'll do 2,000 divided by 10,000 over here. तो मुझे बताओ 2,000 क्या आता है divided by 10,000? 18,900. Guys, can you please reconcile the answers? 3,000 divided by 10,000. 94,500. Can you tell me the value of painting now? 94,500 multiplied by 3,000 divided by 10,000. हमारे पास पेंटिंग का शेयर आ जाएगा, that is 28,350. Then we have बताना मुझे इसका क्या आ रहा है कैंटीन का. 94,500 1,890. Okay. Then what you can do is total में से ये चारों माइनस कर दो, the remainder. 28.
so that you eliminate the rounding off element. Okay, get it? सुपरविजन किसकी होगी फरीद, कैन यू टेल मी? सुपरविजन किसकी होगी? कॉमन सेंस, पूरी फैक्ट्री सुपरवाइज। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो supervision का overhead is how much? 10,260. We can see that over here. We can see the number of employees. Can you do the apportionment, please? For depreciation, 640. Okay, okay. Very good. Okay. Welfare का 420. Okay, I'll just sort this out. Okay. Very good, Zoid, to point that out. Let's do depreciation, guys. Depreciation हमारे पास कितनी आई हुई है यहाँ पे? 5% on cost. तो आप क्या कर सकते थे? आप जो वैल्यू ऑफ मशीन है ना वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। कटिंग की 600,000 है, यानी कि मशीन की वैल्यू 1.2 मिलियन में से कटिंग के डिपार्टमेंट में कितना यूज़ हो रही है? 600,000। मोल्डिंग की 400,000, पेंटिंग की 200,000। हमने क्या किया हुआ है? हमने इसका 1.2 मिलियन का 5% निकाला, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया था? डेप्रिसिएशन आ गया था 60,000। ठीक है ना? अब आप क्या करते हैं इसको? आप इसको अपोर्शन कर दें। तो 60,000, यस फरीद, कैन यू सजेस्ट हाउ डू आई अपोर्शन इट? कटिंग की वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? 600,000। टोटल वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? 1.2 मिलियन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्शन के अंदर। सही है? मशीन इज इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्शन। बताएं जरा क्या आ रहा है? 30,000। या तो वो मैं बाद में समझाता। वी कैन ऑल्सो डू 600,000 का 5% डायरेक्टली। बट फरीद, कैन यू टेल मी द आंसर प्लीज? अफनान, फरीद, या प्लीज टेल मी द आंसर। We do have maintenance hours given over here. Yeah, we maintenance hours नहीं दिए हुए होता तो I would have used in hours. Okay. क्योंकि मशीन यूज ही इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में होगी, कैंटीन और मेंटेनेंस में मशीन यूज ही नहीं होती। ओके, कॉमन सेंस गाइस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। मशीन यूज ही कहाँ पे होगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। ये हेडिंग देख रहे हैं आप एक क्वेश्चन में? ये तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। तो मशीन यूज ही हमारी यहाँ पे होती है, तो वो आएगा ही डेप्रिसिएशन हमेशा उसमें। थर्ड वन इज 10,000, राइट? कैन यू गाइस डू मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर मी प्लीज? मशीन मेंटेनेंस आवर्स दिए हुए मैं 90, 70 एंड 40, और टोटल मेंटेनेंस आवर्स आर 200। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 9790। फरीद, आर यू देयर? आर यू फॉलोइंग अलोंग? 90 divided by 200. Can you tell me the answer for maintenance cost, please? 4406. Zoeb, so can you do molding and painting for me, please?
3425. Maintenance cost for the third one is 3427 है. Okay. Great. Yeah, yeah, yeah. That's correct. Yeah. It should reconcile with the total ना, इन तीनों को sum up करके फिर यही बनना चाहिए. So what I'll do is 9790 minus these two, I'll get the third one. Although I'll do the calculation over here. 9790 multiply by 40 divided by 200. तो वो जो rounding off element है वो nullify हो जाएगा यहाँ आके. Power, can you see the power का overhead, that is 19925. That will be done according to what? Kilowatts given over. Okay. Very good. So guys, can you do that? All right. So great stuff. We're actually done with all the calculations, and this is called apportionment. Okay. Now, can you write down the definition of apportionment, please? Apportionment is allotment of proportions. Apportionment is allotment of proportions of items. Allotment of proportions of items to cost centers. ये हमारे पास 5 कॉस्ट सेंटर्स हैं. हमने अलॉटमेंट कर दी है हर ओवरहेड की. ठीक है, प्रोपोर्शनेटली. ये हमने प्रोपोर्शंस निकाले हुए हैं according to a suitable base. I'm repeating the definition again. Apportionment means allotment of proportions of items to cost centers. आगे लिखें. When items of cost cannot be directly charged, when items of costs cannot be directly charged. ये definition आती है इसलिए लिखवा रहा हूँ. Directly charged or accurately identifiable with any cost centers they are prorated they are prorated or distributed on some on some predetermined basis on some predetermined basis. ठीक है, तो अपोर्शनमेंट तो हमें क्लियर हो गया. अच्छा, प्रीडिटर्मिन्ड बेसिस का मतलब ये है कि relationships between the base and other variables within the organization. Relationship between the base यानी कि basis ये नहीं, and other variables जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया कॉस्ट का बिहेवियर. सही है, आगे चलते हैं. अब हम करेंगे इसको स्केड्यूल को थोड़ा
टेक्निकल बेसिस पे डिस्कस। आप ये देखेंगे कॉस्ट सेंटर्स कितने हैं हमारे पास, कैन यू सी, 1 2 3 4 5, और ये तो टोटल है 5 कॉस्ट सेंटर्स। ओवरहेड हमने अपोर्शन कर दिए। मुझे पता है कितने सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं इन पांचों में से। हाउ मेनी आर सर्विस डिपार्टमेंट्स? कैंटीन एंड मेंटेनेंस। ठीक है। ऑब्जर्वेशन गाइस, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, पहले फैसिलिटेट कर रहा होगा? कैंटीन और मेंटेनेंस। खाना तो सबको ही मिल रहा होगा ना? कैन यू सी दैट फरीद? कैंटीन के जितने भी ओवरहेड्स हैं उसका बर्डन किसको शेयर करना चाहिए? बाकी पांचों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कॉमन सेंस, बिकॉज कैंटीन इज प्रोवाइडिंग food to everybody, it's facilitating to everybody, right? मेंटेनेंस को भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पेंटिंग को भी कर रहा है, मोल्डिंग को भी कर रहा है, कटिंग को भी कर रहा है। तो जितना भी कैंटीन का ओवरहेड का बर्डन शेयर है 6261, वो किस में डिवाइड होगा? बाकी सब में डिवाइड होगा। इसको हम कहते हैं रीअपोर्शनमेंट। क्या कहते हैं? आई एम क्लोजिंग डाउन कैंटीन डिपार्टमेंट। सही है। जितना भी ये ओवरहेड है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन किसके अकॉर्डिंग होगी, मुझे बताएं ज़रा। खाना किसको प्रोवाइड कर रहा है कैंटीन? एम्प्लॉयज़ को। फरीद, आर यू देयर? आर यू फॉलोइंग? हेलो फरीद, आर यू देयर? ओके। सो कैंटीन इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू एवरीबडी, तो इसका बर्डन पर सभी शेयर करेंगे। सबका मतलब द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनेंस। अब ज़रा देखते हैं जो क्वेरी थी आप सबकी, कॉमन स्टूडेंट प्रॉब्लम। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास? 120 कटिंग के हैं, मोल्डिंग के 90, 150, 25। मैं 15 को काउंट इसलिए नहीं कर रहा, इन 15 एम्प्लॉयज़ का जो बर्डन था, जो ओवरहेड्स थे, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट ही है ना। तो इनका जो बर्डन है वो कौन शेयर करेंगे? बाकी सब करेंगे। तो अब हमारा डिनोमिनेटर कितना बन जाता है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 400 में से 15 मैं इस डिपार्टमेंट को क्लोज कर रहा हूँ, इसका जो ओवरहेड्स का बर्डन है वो कौन शेयर करेगा? बाकी सब करेंगे। ठीक है। या यस, यस, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। मैं यही बोलना चाह रहा था कि यू नीड टू ऑब्जर्व। पहले तो वो क्वेश्चन में बता भी देता, एलोकेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये बात बोली हुई है उसने, देखो। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन ओवर एन अपोर्शन स्केड्यूल, जो हमने बना लिया। एलोकेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमने री एलोकेट कर रहे हैं कैंटीन और मेंटेनेंस जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो प्रोडक्शन होगी तो ये दोनों इक्वेशन में आ रहे हैं ना भाई। एक स्कूल बंद पड़ा हुआ है, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या चाय वाले का काम है अभी स्कूल में? फोटोकॉपियर का काम है अभी स्कूल में? कॉमन सेंस गाइस, लेट्स बी वेरी लेट्स डिस्कस अ वेरी लेमैन एग्जांपल। क्या अभी टीचर्स को चाय चाहिए स्कूल में? नहीं चाहिए ना। यू फॉलो दैट। तो जब पढ़ाई ही नहीं हो रही स्कूल में तो फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है। हाँ, डायरेक्ट लेबर जब काम कर रही होगी या प्रोडक्शन हो रही होगी फैक्ट्री में तो फिर इनका भी काम आ जाता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी होता है जैसा कि वो भी एक सर्विस डिपार्टमेंट है। तो अब जो जोहेब ने पूछा है कि सर हाउ डू वी आइडेंटिफाई विच डिपार्टमेंट हैज टू बी क्लोज डाउन फर्स्ट, विच डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू एवरीबडी फर्स्ट, पहले तो ये देखना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैंटीन की तो नहीं हो रही ना। मेंटेनेंस तो आप फैक्ट्री की कर रहे हैं मोर और लेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कर रहे होंगे। सही है। कैंटीन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू एवरीबडी, कैन वी सी दैट? ऑफ द टू सर्विस डिपार्टमेंट्स कैंटीन एंड मेंटेनेंस, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? पहले
You get my point? Farid, did you get this? Farid, did you get this? Hello? Yeah. Canteen is providing food to everybody, right? उसमें तो सिक्योरिटी वाले भी होंगे और टीचर्स भी होंगे और एडमिन वाले भी होंगे. Everybody comes to the canteen and buys food, right? During the lunch time. तो कैंटीन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू एवरीबडी, तो इसका जो ओवरहेड है वो सब बर्डन शेयर करेंगे बाकी सब. पहले आई एम गोना क्लोज डाउन द सर्विस डिपार्टमेंट एंड इसका जो ओवरहेड्स का टोटल आ रहा था वो सब अब बाकी सब डिवाइड करेंगे. हाउ डू वी डू दैट? कैंटीन किसको खाना प्रोवाइड कर रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. सो अब हम कटिंग का शेयर निकालते हैं. 6261 एक्सक्यूज मी इज द टोटल ओवरहेड. कटिंग के कितने एम्प्लॉइज हैं? 120. डिनोमिनेटर कितना बनेगा अब हमारा? 400 आएगा. फरीद 385 आएगा. वाई? बिकॉज आई एम क्लोजिंग डाउन दिस डिपार्टमेंट. इन एम्प्लॉयज का बर्डन जो भी इनके एक्सपेंसेस बन रहे हैं वो कौन शेयर करेंगे? बाकी सब करेंगे. ओके तो 400 माइनस 15 क्या आ जाता है? 385. ये लिख लें हमने अपने पास वर्किंग. वाई एम आई डूइंग दिस? आई एम क्लोजिंग डाउन. मैं कैंटीन डिपार्टमेंट का पूरा जितना भी बर्डन है वो बाकी सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डाल रहा हूँ. जैसे कि फोटो कॉपियर का जो बिल आ रहा है, ठीक है, जो फोटो कॉपियर का जितना भी टास्क आ रहा है वो या तो स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया जाएगा या टीचर्स पे डाल दिया जाएगा. बहुत सारे कॉलेजेस कहते हैं टीचर्स को कि आप अपनी फोटो कॉपी का एक्सपेंस खुद बेयर करें. ठीक है. बहुत सारे कॉलेजेस कहते हैं स्टूडेंट्स को चार्ज किया जाएगा. टीचर्स आर नॉट सपोज टू बेयर दिस. ठीक है. तो अगर तो टीचर्स खुद बेयर करें तो वो बेचारे फिर इसका बर्डन अपने ऊपर लेंगे सारा. तो बताएंगे ज़रा क्या आता है कटिंग का. ओके कैन वी कैलकुलेट शेयर फॉर कटिंग गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी द अमाउंट? 6261 multiplied by 120 divided by 385, that is 195. 19. ओके राउंड ऑफ कर लो तो फिर वो दूसरे वाले नहीं करेंगे. अच्छा दूसरे वाले का फरीद निकाल लेते हैं. कैन यू डू दैट फॉर मी? 6261 कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मोल्डिंग के? 90 डिवाइडेड बाय 385. बताओ क्या आ रहा है मोल्डिंग का शेयर रीअपोर्शनमेंट का? 1463 या 64 है? 64 है. ओके देन उसका निकाल लेते हैं पेंटिंग का. 6261 इज द टोटल ओवरहेड फॉर कैंटीन. कितने एम्प्लॉइज हैं? 150 डिवाइड बाय 385. दैट गिव्स यू अच्छा मेंटेनेंस का कैसे आ जाएगा? 6261 माइनस ऑल दीज थ्री फिगर्स विल गेट मेंटेनेंस. कितना आ जाता? बता दें यार. वैसे ही हम लोग बिल्कुल एलोकेट करें जैसे पहले ऊपर किया था. टोटल में से ये तीनों माइनस कर दें आपको मेंटेनेंस का शेयर आ जाएगा. दैट इज हाउ मच? मेंटेनेंस का शेयर कितना आ रहा है? 6261 माइनस दीज थ्री तो आपके पास मेंटेनेंस आ जाएगा विच इज हेलो 407. Very good. So last is
हमने एक डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया. Let's move on to the second one, that is maintenance. All right. Guys, other stuff is pretty easy. जो टेक्निकल पार्ट था वो रीअपोर्शनमेंट का ही था. ओके, तो कैन यू टेल मी द टोटल मेंटेनेंस ना. मेंटेनेंस का कितना आ रहा है टोटल, इफ यू सी, इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ कैंटीन. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम रीअपोर्शनमेंट कर देंगे मेंटेनेंस की. नहीं, दो भी हो जाते हैं बेटा. या आई मीन दैट कैन हैपन, यू कांट अवॉइड. कभी कभी एक का भी आ जाता है और दो का भी आ जाता है. नाउ द सेकंड डिपार्टमेंट सर्विस जो हम क्लोज डाउन कर रहे हैं वो ये है. अच्छा, मेंटेनेंस पूरी फैक्ट्री की हो रही होगी. जो मेंटेनेंस है वो सर्विस का पूरी फैक्ट्री के लिए कर रहा होगा. ठीक है, हमने ऊपर क्राइटेरिया लिखा हुआ है रीएलोकेशन का. सही है, जस्ट होल्ड ऑन. हमने पहले किसको रीएलोकेट किया, कैंटीन. हमने कैंटीन को रीअपोर्शन कर दिया. अब हमारे पास दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस. ओके, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एरिया एलोकेशन का क्या मैंने बेस रखा हुआ है, फ्लोर एरिया. ओके, नाउ लेट्स टेक दिस फॉर पे अटेंशन. कितना ओवरहेड बन रहा है मेंटेनेंस का, 10,673. आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ओवर हियर. कटिंग का निकाल दें. कटिंग का फ्लोर एरिया कितना है हमारे पास, मेंटेनेंस तो पूरी फैक्ट्री की हो रही होगी ना, तो ये मेंटेनेंस सफाई वगैरह जो हो रही होगी पूरी फैक्ट्री की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की चल रही होगी. तो 4500 फ्लोर एरिया है. डिनोमिनेटर बताएंगे कितना बनेगा मेरा, 10,000 होगा फरीद. हेलो, so what will be the denominator? Have I already shut down? नहीं, डिनोमिनेटर कैंटीन ऑलरेडी बंद कर चुके हैं हम. कैंटीन ऑलरेडी बंद कर चुके हैं. अब मेंटेनेंस को भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ओवरहेड्स कौन बेयर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. ये सारा बर्डन मेंटेनेंस का और कैंटीन के ओवरहेड्स का कौन बर्डन शेयर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. लेकिन कैंटीन का हमने बर्डन शेयर कर दिया है. अब मेंटेनेंस का कर रहे हैं 10,673 का. बताएंगे क्या आ रहा है कटिंग का, कैन यू प्लीज टेल मी. कटिंग कैंटीन ऑलरेडी बंद कर दिया है, मेंटेनेंस को भी बंद करने की, तो 10,000 में से क्या क्या माइनस हो जाएगा, 10,000 माइनस 2 10,000, सॉरी. हाँ, क्या आ रहा है, पहले वाले का शेयर क्या आ रहा है जोए. जोएब, कैन यू टेल मी द आंसर प्लीज. डिवीजन तो एक ही न्यूमरेटर एक ही डिनोमिनेटर आएगा ना, 9,500 का. कैंटीन ऑलरेडी बंद हो चुका है, मेंटेनेंस भी बंद हो जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर 9,500 का ही रहेगा. 9,500 तो नहीं चेंज होगा, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा, 2,000 और 3,000.
Can you tell me the answers, please? And third one is, वो माइनस करके भी निकाल सकते थे, ठीक है. नाउ लास्ट इज बस अब हमारा एंड हो गया इस पे, ये वाला पार्ट ए. तो टोटल बता दो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड जो बन रहे हैं. या यू सम देम अप, रीएलोकेशन ऐड कर दो, और जो इनिशियल अपोर्शनमेंट थी वो भी ऐड कर दोगे. रीअपोर्शनमेंट और इनिशियल अपोर्शनमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे. देन फरीद, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. ऑलराइट, ग्रेट स्टफ गाइस. इनके जो ओवरहेड्स का शेयर बन रहा है सर्विस डिपार्टमेंट्स के, उसका बर्डन कौन शेयर, उसका बर्डन किसको बेयर करना चाहिए एक्चुअली? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को. सही है. तो पहले हमने कैंटीन क्लोज किया. सही है. और फिर मेंटेनेंस भी पूरे फैक्ट्री की हो रही होगी एक साथ. ठीक है. तो मेंटेनेंस को क्लोज कर दिया. अब वो आपको बता देता है कि पहले कौन सा क्लोज करना है. यूजुअली दे टेल यू. नहीं बताया हुआ तो वी हैड डिराइव्ड द ऑर्डर फॉर रीअपोर्शनमेंट. पहले कैंटीन क्लोज होगा हमेशा, फिर पर्सनल क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट बेस? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. फिर तीसरा, इन दोनों में से अगर पहले जो क्लोज हो गया फिर मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस के बाद स्टोर्स होगा, स्टोर्स के बाद बॉयलर हाउस होगा. यूजुअली दो सर्विस डिपार्टमेंट्स दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, या एक भी दिया हुआ होता है. आपको वो बता देता है कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है इन पांचों में से. ओके. वो आइडेंटिफिकेशन तो आप खुद भी कर लेंगे. अब ये हमारा हो गया पार्ट ए सॉल्व. पार्ट बी इज calculate overhead recovery rates for the production departments using a suitable base. Overhead recovery rates. Budgeted. This is simple stuff, nothing to worry about. लेकिन पार्ट ए से कनेक्टेड है ये. Budgeted overheads of each department divided by budgeted direct labor hours. ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया है नोट्स में. Machine hours direct labor cost direct material cost. Alright, if you observe, हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के? कटिंग, मोल्डिंग एंड पेंटिंग. 3. पहले हम कटिंग का निकाल लेते हैं. कटिंग के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास? इफ यू कैन ऑब्जर्व, 223,969. 223,969. ठीक है. ये कटिंग का ओवरहेड्स का टोटल आ रहा था रीअपोर्शनमेंट के बाद.
अब डिनोमिनेटर में क्या लेंगे हम? कटिंग डिपार्टमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसने यहाँ पे हमें अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बोला हुआ यूजिंग ए सूटेबल बेस, एब्जॉर्प्शन करनी है यूजिंग ए सूटेबल बेस। डिनोमिनेटर में देखते हैं हमारे पास क्राइटेरिया में पहला क्या आ रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, दूसरा क्या आ रहा है, मशीन आवर्स, तीसरा लेबर कॉस्ट और चौथा मटेरियल कॉस्ट। पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स दोनों में से कटिंग के कौन से लेबर आवर्स ज़्यादा हैं या मशीन आवर्स ज़्यादा हैं? कैन यू सी फरीद, कैन यू सी दिस? मशीन आवर्स आर हायर, दैट मीन्स कटिंग में मशीन का ज़्यादा पोर्शन यूज हो रहा है, सही है? सो व्हाट आई डू इज आई सेलेक्ट द डेज अकॉर्डिंग टू दैट। मैं ऑब्जर्व करूंगा कि पहले दो जो क्राइटेरिया हैं, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, इन दोनों में से ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे, इस डिपार्टमेंट की, ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स पे। आई ऑब्जर्व दैट, मैंने डिनोमिनेटर में मशीन आवर्स ले लिया। बताएंगे क्या आ रहा है डिवाइड करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कटिंग का? Guys, I'm waiting for an answer. तो 2.8, टू डेसिमल प्लेसेस बता दो। 2.8, ओके, 2.80, ओके। पर मशीन आवर लिखना ज़रूरी है, ऑलराइट? कैन यू डू द अदर टू डिपार्टमेंट्स फॉर मी प्लीज? मोल्डिंग एंड पेंटिंग। पर व्हाट? पर डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर? वेरी गुड। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी? 124402। अच्छा, फरीद, कैन यू टेल मी व्हिच विल बी द डिनोमिनेटर फॉर पेंटिंग? Farid, in this case, direct labor hours will be the denominator, 60,000 for painting. क्या आ रहा है overhead absorption rate या recovery rate? Can you please tell me? 2.02 per direct labor hour, सही है? पार्ट ए पे पार्ट बी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, and then we'll do part C, which is easier stuff. Let me know when you're done with the copying. Just note this down. Let's do part C. Calculate cost per unit if the above data relates to the production of 20,000 units. यानी कि जितना भी डेटा दिया हुआ है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, टोटल जो भी दिया हुआ है, ये सब कितने यूनिट्स का है? हाउ मेनी यूनिट्स के लिए बोल रहा है वो अस्यूम करने के लिए? 20,000 यूनिट्स। What will be the selling price per unit if company wants to earn a gross profit markup of 40%? पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है? What I'll do is, sorry, let's just finish this. This won't take long. ओके, तो हमारे पास टोटल डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है। इफ आई आस्क यू गाइस कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट बताओ, हाउ विल आई गेट दैट? 1059 टोटल डायरेक्ट मटेरियल है,
एंड if the above data relates to 20,000 units, तो मैं क्या करूँगा? I'll get cost per unit, which is how much? Fareed, can you tell me? Similarly for direct labor, per unit आ जाएगा. Very good. And for direct labor, yeah, we'll do that. Just hang on for a moment. अभी तो direct cost की बात की है ना. Fareed, what is it? 46.65. 46.65. That's the answer, right? Okay. क्या सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में? Okay, very good. So what I'll do is, but overheads तो मेरे पास पर यूनिट नहीं है. हमारे पास ओवरहेड्स दिए हैं यहाँ पे पर मशीन आवर एंड लेबर आवर, राइट? ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है. लेट्स मेक अ कॉस्ट शीट. डायरेक्ट मटेरियल, which is 52.95. Direct labor, which is 46. Afnan, did you just check this? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, which is how much? Can you please tell me? 99.6. ठीक है. अब हम हेडिंग देंगे ओवरहेड्स की यहाँ पे. सही है. ओवरहेड्स हमारे पास तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थे. कटिंग, कितना आया था कटिंग का ओवरहेड? कितना आया था डॉलर? या डेसिमल वाला कटिंग का ओवरहेड ओ आर आर या ओ ए आर कितना आया था? 2.80 पर मशीन आवर था, पर लेबर आवर था? मशीन आवर. आई थिंक नहीं चलेगा टेस्ट में. ऑलराइट. सो मैंने यहाँ पूरा इसका लिख दिया ना. अब जरा ऑब्जर्व करते हैं कितने मशीन आवर्स हैं हमारे पास कटिंग के. फरीद, कैन यू सी दिस? 80,000. इफ आई आस्क यू, ये 80,000 मशीन आवर्स बनाने के लिए कितने यूनिट्स लगे? मतलब 20,000 यूनिट्स. दिस इज बेसिक मैथ्स. मैं इसको सिंपलीफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है. तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स रिक्वायर्ड होंगे बताएंगे ज़रा? 80,000 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 20,000 यूनिट्स. तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स लग रहे होंगे? कैन यू टेल मी? फॉर कटिंग ओनली 4. सही है. अब पता है क्या, मार्किंग स्कीम में एक फ्रैक्शन लिखा हुआ होगा कि जी 80,000 डिवाइड बाई 20,000 कर दो. सही है ना. ये एक चीज़ इतना कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंट्स को. हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. क्योंकि मेरे पास ओ ए आर पर मशीन आवर्स है तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? नंबर ऑफ. फरीद, आई यू फॉलोइंग दिस? फरीद, आई यू लॉस्ट? मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मैं मशीन आवर्स से करूंगा ना. मुझे यहाँ पे मशीन आवर्स चाहिए होंगे एक यूनिट बनाने के लिए. एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए? कैन यू सी द मैथ्स दैट आई हैव डन ओवर हियर?
4 मशीन आवर्स, तो मैं यहाँ पे 4mh लिख दूंगा, अब्रीविएशन। बताएंगे ज़रा क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, हमें कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी ओवरहेड्स की, कटिंग की। थोड़ा सा टेक्निकल है यार, आई एम श्योर ऑनलाइन थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है इसको, लेकिन यही इस टॉपिक का मेन पर्पस है कि हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स की एलोकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिकवरी रेट। बताएं क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके ओवरहेड्स? 11.2। ठीक है, अब मोल्डिंग का निकाल लेते हैं। मोल्डिंग का ओ ए आर बताएंगे या ओ आर आर कितना आ रहा था? गाइस कैन यू गो एट द बैक एंड प्लीज चेक, टेल मी द वैल्यू। व्हाट पर मशीन आवर, हमेशा आंसर देते हुए बताना है कि पर मशीन आवर है, उसकी डिपेंडेंसी किस पे, उसका बेस क्या है, पर मशीन आवर है। और एक यूनिट में कितने आवर्स लग रहे होंगे मोल्डिंग के, जरा निकालते हैं। मशीन आवर्स ढूंढे पहले हमने। फरीद, आई फॉलोइंग दिस? आई एम गोना पिक अप मशीन आवर्स फ्रॉम हियर, आई डू द मैथ। कितने मशीन आवर्स हैं? 50,000 मशीन आवर्स और हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स रिक्वायर्ड होंगे? क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ना, तो मुझे मशीन आवर्स ही पर यूनिट चाहिए होंगे। बताएंगे ज़रा। 2.5 मशीन आवर्स। ओके, तो बताएंगे एक यूनिट में कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है, कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं होल्डिंग के? 6.2। वेरी गुड। और लास्ट इज पेंटिंग, तीसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यही था ना। इसका ओ आर कितना निकाला था हमने? कैन यू गो एट द बैक एंड चेक? पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो फरीद, कैन यू सी हाउ विल आई सॉल्व दिस? पहले तो डायरेक्ट लेबर आवर, पेंटिंग के पेंटिंग का कॉलम देखा। आई एम गोना फाइंड आउट डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने थे। फॉर 20,000 यूनिट्स। तो कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हो रहे होंगे एक यूनिट के लिए? थ्री। कैन टेल मी द आंसर प्लीज? ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं पेंटिंग के? फरीद, आर यू देयर? कैन टेल मी द आंसर फॉर पेंटिंग? एक यूनिट में कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं पेंटिंग के, पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड्स? 6.06। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मुझे तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आई एम गोना ऐड प्राइम कॉस्ट विद दीज थ्री फिगर्स। कैन यू टेल मी टोटल कॉस्ट क्या आती है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, विच इज हाँ, प्राइम कॉस्ट में ये तीनों ओवरहेड्स भी ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी ना। ये प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, एडिशन ऑफ ऑल डायरेक्ट। कितना? नहीं यार, 99.6 प्लस वन। हाँ, तो वो उसमें प्राइम कॉस्ट भी तो ऐड करो ना। 123.06 इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो क्या बोल रहा है, मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी आफ्टर अर्निंग अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 40%। मार्कअप, प्रॉफिट मार्कअप कॉस्ट पे ही हमेशा कैलकुलेट होता है। स्कूल में तो आई एम श्योर ये नहीं करवाया होगा। 123
123.06 का 40/100 निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट पता चल जाएगा, कितना प्रॉफिट आता है। इस कॉस्ट का प्रॉफिट का पोर्शन क्या आ रहा है? और कॉस्ट 49.224। इफ यू ऐड कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट, जो मैथ्स में पढ़ा हुआ है क्लास 6 7 में, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी प्लस पी, हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। तो बताएंगे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाती है एक यूनिट बनाने की? 172.284। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। इट वाज अ वेरी इन डेप्थ डिटेल्ड क्वेश्चन। टाइम इसलिए लगा था क्योंकि बहुत लंबा, बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन है। डोंट वरी अबाउट इट, बट इट एक्चुअली कवर्स अप एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ओवरहेड एलोकेशन। अब इसकी डेफिनेशन है, अपोर्शनमेंट की डेफिनेशन लिखवा दी है मैंने, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है। इफ यू guys want to write that down we can do that. Hello? हेलो? एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख लें प्लीज अपने पास। Indirect cost or overheads will have to be distributed. Indirect cost or overheads will have to be distributed over. Indirect cost or overheads will have to be distributed over the final products. Over the final products, so that the charge is complete. So that the charge is complete. जो हमने OAR निकाला हुआ है ना, उसकी definition. This is known as absorption of overheads. This is known as absorption of, have to be distributed over the final product, over the final product, so that charge is complete. So that charge is complete. This is known as absorption of overheads. ये डेफिनेशन पास्ट पेपर्स में आ चुकी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं थ्योरी में। Alright guys, let's keep it till over here. Yeah, very good. Let's keep this. We're done with this question, so let's keep it till over here.